Hello everyone. Good afternoon to all of you. Welcome to BYJU'S exam prep and welcome to this session for today where we are going to talk about the test taking strategy. Okay. So before I start, can I just confirm it once to me that is all okay? Am I audible and visible to all of you? सब लोग आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक बार कंफर्म कर दीजिए. After that, we will start with our session. Okay. So, what is the session all about? Let me just give you a little hint about it. If you all are preparing for CAT 2023, I'm sure you would know that how important is it to write the mock tests. And if you would have seen the session that we took yesterday, I and Gautam, where we talked about the analysis of CAT mock 2012. So there we put a lot of, emphasis on this that, apart from the mock, the most important part actually is the analysis of that. That becomes the most important part. So in today's session, I'm going to talk about the test taking strategy. And yes, I'm going to take a session after a few days where I'll also be talking about how to analyze a paper well. So we'll be talking about these things in a few days more. Okay. So once again, a good afternoon to all. Good afternoon, Aditya. Good afternoon, Naveen Yadav. Very good afternoon. So I think we can start without any delay. Hello, Sonali. So it will be a crisp session, small session, where I'm just going to talk about the strategy. And if you saw the yesterday's session, there also we talked about it that we can't say that there is a generic strategy that is applicable to all of you. ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि ये देखिए ये तीन तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं तो ये सब पे यही लागू होती है. सो डू एनी वन ऑफ देम, राइट? सो दे आर डिफरेंट पीपल हु हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज, जैसे हम डिस्कस जब कर रहे थे. सो आई हैड अ डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑफ डूइंग वीआरसी. गौतम सेड दैट आई हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी. देयर आर स्टूडेंट्स हु से नहीं नहीं सर हम तो और अलग तरीके से करते हैं. तो एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ये आपको फिगर आउट करना है व्हाट सूट्स यू द बेस्ट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट, यू कैन से, the outcomes that you should be looking at. Exactly what you would be doing, that's completely up to you. तो मैं कोशिश करूंगा उसके आसपास पहुंचने की. Yes, if you tell me your problems that I am facing this kind of problem, how should I go about it? So probably I'll try to give my best answer for that. वो अगर कुछ भी है तो please write it in the chat box. Okay. Good afternoon, Vanshika. So without a delay, let us start with the session now. First of all, ये मैं हमेशा ही बोलता आया हूं कि काफी लोगों को ये पता ही नहीं होता that what is my target, right? Trust me on this. Many students go to the exam hall with just a single perspective कि आज फोड़ देंगे पेपर को, that today we will do everything in the paper, we'll do this, we'll do that. ये सही अप्रोच नहीं है. This is a competitive exam, and in a competitive exam you can't go with this kind of approach that I'll just go there, whatever comes my way I'll just do it, and today I am going to score heavily with respect to the other days. That's not the right way of doing things. You should always have a proper strategy which you are going to follow, and for that you should have a proper target that you are looking at. मुझे कहाँ पहुंचना है, that's very important. So first of all, how do you make that target for you? Of course, go through the previous year papers. This is a score versus percentile thing that you see on the screen. पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है इसके अंदर. So here I see that in 2022, probably you can say in the last 3 years, the most difficult paper was in 2022, right? Last all 3 years, the paper was of 2 hours, and you see that it keeps decreasing. Though, of course, 2020 had a higher number of questions as well. It was out of 228, it was out of 198, it was out of 198, though the total time for all 3 years was 2 hours only, right? In the last year, we saw a person at a score of 110 had a percentile of 99.9. A person at a score of 93 had a percentile of 99.5, and a decent guy should be targeting a 99 percentile, which occurs at somewhere around 83, right? ये मैं 83 के बारे में बात कर रहा हूँ. Of course, CAT 2021 पे अगर आप जाओगे, the figures were slightly higher because the exam was a little difficult. फिर 2095 की बात करता हूँ. 2090 sorry 95 percentile was there at a score of just 60, which means 20 questions. Now, what is my target? How would I decide my target? Generally, we decide our target by currently whatever we are scoring in different mocks.
अभी हमारे स्कोर्स कितने आ रहे हैं? लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक. मैं ऐसा नहीं सोच सकता that today I am scoring 70 percentile in a mock, so now I'm going to target straight away 99.5. Probably that's not the right approach. I'm not saying that you can't get 99.5, but of course it is going to take some time. It's a gradual process. We will move slowly over there. तो सीधा वहां पे जाके हिट कर देना कि अगले ही एग्जाम में 99.5 लेके आना है, it's going to be wrong. It's like मतलब आपको you have a ladder with you and you are directly want to go to the top foot of it. वो नहीं हो सकता. That's not possible. So let's be very realistic about all these things. Everyone wants to do the best in this exam. Everyone wants to have a 99.9 or 100 percentile. But are we realistic enough to know that can we reach there within these 2-3 months? Where are we right now? A person who is currently getting more than 99 percentile in the mocks probably can say कि मेरा टारगेट 100 है. बट अगर मैं 50-60 परसेंटाइल पे हूं तो शायद मैं अभी के लिए नहीं कह सकता हूं माई टारगेट इज 100. प्रोबेबली फॉर नेक्स्ट ईयर आई कैन डू सो. दैट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट? सो मॉक्स के स्कोर से आप अपने एक्चुअल स्कोर्स को कैसे रिलेट कर पाओगे? दिस ऑल वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. लेट मी अगेन डिस्कस दैट वंस अगेन. दैट इज ओवर हियर कि मॉक में जो स्कोर आपका आता है, द परसेंटाइल दैट यू स्कोर इन मॉक, इट इज जनरली on the lower side with respect to actual CAT. So if today your percentile in CAT is around 70, you can expect an 87-88 percentile today in CAT. That 70 percentile is equivalent to 87-88. Please do not misconstrue it by saying that today if you are getting 17 mock, you should be targeting 87-88 in CAT. No, that's not what I'm saying. I'm saying if today you are getting 70 percentile, that means today only you are good enough to get an 87-88 percentile in CAT. So target would be somewhere around 97-98 in that case. A person who is getting 80 percentile in mock today, he is actually equivalent to a 90 to 93 percentile in CAT today. His target should be around 98-99. A person who is getting 90 percentile in mock today, that means from CAT's perspective, it is very close to 95-96. That guy would be looking for a 99 plus percentile. So that ways you would make your targets for your actual exam, right? But keep that in mind that targets should be realistic. I repeat, ऐसा नहीं कि बस करेंगे, फोड़ देंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे. Let's be realistic and we have to make a strategy according to that. That how would I reach there? क्या तरीका होना चाहिए? What all should I be doing? About all those things I'll be discussing in a little while. सो सी कुछ कह रहे हैं क्वांट्स में 4 सेक्शंस करेक्ट हो जा रहा है, मॉक्स में वो थोड़ा कम है. सी आई थिंक यू शुड टेक इट एट लीस्ट टू 6 to 7 questions. 6 to 7 questions will take you to 85-90 percentile. That means you are clearly above the sectional cutoffs of each and every college. And moreover, try to be extremely strong in the other two sections. Then अगर यहाँ पे आपका इतना स्कोर आ रहा है तो कोशिश कीजिए should be scoring well in the other sections. That becomes an important point for you then. I hope you are getting my point. आदित्य कुछ कह रहे हैं, सर इन द मॉर्निंग स्लॉट आई गेव मॉक एंड आई गॉट 12 मार्क्स इन VARC, 30 marks in LRDI and 45 in QA. What I do for VARC? Target 100 percentile? Of course not. I mean, you are not going to target 100 percentile for that. But VARC में analyze it properly, आदित्य. देखिए जरा एक बार कि आप क्या कर रहे हैं VARC के अंदर. Why are you getting it wrong? Because 12 marks are too less. Rather, I see a positive in 12 marks. कि 12 marks का मतलब ये that I can't go below that. इससे कम क्या ही आएगा यार. मतलब 4 क्वेश्चन अभी हम लोग ठीक कर रहे हैं. अगर 40 मिनट्स में आई एम एबल टू डू 4 क्वेश्चन, दैट मींस आई एम नॉट गोइंग टू गो बिलो दैट. सो आई थिंक मेक स्मॉल टारगेट्स. आदित्य कोशिश कीजिए दैट बाय सितंबर एंड यू शुड रीच अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 7 to 8. स्लोली इंप्रूव करो, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 ऐसा करके. देन बाय अक्टूबर एंड यू शुड रीच समवेयर अराउंड 10-11 क्वेश्चंस. एंड बाय नवंबर एंड इट शुड रीच अराउंड 13-14 क्वेश्चंस. 13-14 क्वेश्चंस का मतलब ये है कि यू वुड बी हैविंग समवेयर अराउंड 96-97 परसेंटाइल इन VA. नहीं भी पहुंचोगे, थोड़ा पीछे भी रह जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है. क्लियरली यू वुड हैव क्लियर्ड योर सेक्शनल कट ऑफ एटलीस्ट, तो उसका इशू खत्म हो जाएगा. Naveen कह सर आई कांट रजिस्ट्रेशन नॉन IIM CAT 2023 if I am eligible from admissions in FMS and IITs and other B schools. Naveen, I could not clearly understand your question, but probably you are saying that you want to apply to FMS, IITs and other B schools. Then you don't have to do anything, just register for CAT, and after that whichever college you want to apply to, just fill up their form. That's all that you have to do, nothing else.
Okay, everyone, let's move ahead from here. So when I talk about verbal ability and reading comprehension, first of all, let's set a target for these. I repeat, मॉक्स की पहली स्ट्रेटेजी का पार्ट ये है कि आपका टारगेट सेट होना चाहिए. Where do you see yourself? A, every person at whichever percentile you are currently, every person should be looking at an minimum 80 percentile. ये minimum है, इससे नीचे तो आप नहीं जा सकते, right? Last year this percentile was at 17 marks, which means 6 questions. Last to last year it was 21 marks, which means 7 questions. Last to last it was again 7 questions, and these are the 3 years when the exam was of 2 hours. So probably I'll be taking a benchmark as the last 3 years only, right? I would say a below average person would be looking for a 90 percentile in CAT, right? A person like me, he would be looking for a 90 percentile at least in the VRC section, because 90 percentile का मतलब ये हो जाता है कि it would also contribute to your overall percentile apart from clearing your sectional cutoffs. An average guy would be looking for a 95 percentile, which was at around 10 questions last year and around 11 to 12 questions last to last year. A good student should be looking for a 99, which was at 13 questions last year. Last to last year, it was at 15. And of course, a brilliant student would be looking for a 43 score or 49 to 50 score, somewhere around that. Now, you have to decide it for yourself. Where do you see yourself? आपका अभी क्या स्कोर आ रहा है, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन ओनली इन मॉक्स. व्हाट स्ट्रेटजी सूट्स यू? ठीक है, आई विल रिपीट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम लास्ट क्लास बिकॉज देयर आल्सो वी टॉक्ड अबाउट द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी. कि जैसे मेरी स्ट्रेटजी ये है कि अगर मैं बीएआरसी कर रहा हूं, आई स्टार्ट विद बीए बिकॉज इनिशियली आई एम नॉट वेरी गुड एट कंसंट्रेशन, right? Moreover, I try to build some confidence because there are 3 theta questions there, the para jumbles. So by doing them, I feel that I've done something and I'm not going to lose anything. Even if all of them are wrong, I'm still at 0. If I get even one of them correct, I am at 3. तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है उससे. Plus, when I talk about those para summary based questions or those para completion based questions, in those questions I'm generally more comfortable, right? There somehow I feel that okay, this is definitely correct, whatever I have done, ये मुझे पक्का सही लग रहा है. ऐसा मेरे साथ वहां पर जाके होता है. So therefore I always start with those questions. That's what I do because that builds my confidence. मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन मेरे हो गए और इतना स्कोर मैं ले आऊंगा. After that I move on to RCs. For different people it might be different. किसी के साथ ये हो सकता है that I'll start with RCs. I'll do first 2 RCs only जो मुझे आसान लगेंगे. I'll go to VA, उसमें से जो आसान लगेगा वो करूंगा, and then the remaining time I'll try the other RCs. That also might be one of the strategies. A person might say नहीं मैं तो पहले पूरा RC करूंगा, then I'll go to VA. This is my way of working. So every person has a different way of working at these things. So this is, you have to decide that what is suiting you, right? मॉक में आपको क्या सूट करता है, बट प्लीज कीप एक्सपेरिमेंटिंग. नो वन स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दैट. हर मॉक में कोशिश कीजिए कोई नई स्ट्रेटेजी यूज करने की. इस बार ये करके देखते हैं, इस बार वो करके देखते हैं. कोई चीज ऐसी लगती होगी आपको, नो 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 दिस नेवर सूट्स मी, इवन ट्राई दैट वंस. What do you have to lose? In one mock you might score low, that's not a problem because mocks are anyways for experimenting only. So this always can be done. सोनाली कुछ कह रही हैं, sir, in CAT form, how can I fill total and obtained marks for 10th? Because in result, there is only grade showing. How can I fill total and obtained marks for 10th? Because in result, there is only grade showing. So अगर grade show कर रहा है तो grade को you have to convert it into marks finally. For example, they are saying either that formula would be given in the mark sheet, follow that. If it is not given in the marks, for example, if it in the mark sheet it is given that if you want to convert your grade into the percentages, multiply by 9.5. मैंने काफी मार्कशीट में ऐसा देखा है. Then multiply by 9.5 जो परसेंटेज आएगा उसके हिसाब से स्कोर्स लिख दीजिए. दूसरा पॉसिबिलिटी आप ये कर सकते हैं, उन्होंने बोला अगर ये नहीं है सो द हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड, राइट, और उसके बेसिस पे आप ये निकाल लीजिए कि आपका ग्रेड ऑब्टेन्ड कितना है इनटू 100, दैट इज द परसेंटेज, एंड फॉर एवरी सब्जेक्ट डू इट. फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट अ ग्रेड ऑफ 8 एंड द हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड इज 10. इसका मतलब यह कि आपका 100 में से 80 स्कोर है, तो आप 100 लिख दीजिए मैक्सिमम और 80 लिख दीजिए. वैसे तो आपसे सब्जेक्ट वाइज तो पूछा नहीं है, ओवरऑल पूछा है. सो मार्क्स आप टोटल को 100 से मल्टीप्लाई करके ग्रेड को उससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए. आई थिंक दिस कैन बी डन.
Okay, sir, your highest ever score in VARC in CAT exam. वीरेंद्र, मुझे याद नहीं है, शायद कभी मुझे याद है फर्स्ट टाइम व्हेन आई रोट कैट प्रोबेबली दैट वाज द हाईएस्ट, उसके बाद कभी नहीं आया उतना। तो जब बिल्कुल केयर फ्री सा था मैं तभी आया, उसके बाद कभी नहीं आया। आई थिंक इट वाज अराउंड 94 95। आई एम प्रेटी बैड एट VARC. Sir, I'm OBC male. What is the cutoff for I am Trichy? Sandeep, I would not directly remember that this time, but you can watch our other videos where we have discussed it actually many a times. I'm good motivational word. Long time. How are you? Amritanshu क्या करे sir? How much time you spent on VA? 8 questions only. Amritanshu, I spent somewhere around 7 to 8 questions on those. Sorry, 7 to 8 minutes. तो जितने VA के क्वेश्चंस होते हैं तकरीबन उतने ही मिनट्स मेरे लग जाते हैं. इन RCs I take a lot of time, right? RCs में ज्यादा टाइम लगना तो I think you can understand because I have to read a passage twice, thrice to understand it properly. And I'm generally now in the last few years now I have seen I'm not able to complete my paper of VARC ever. मैं नहीं कर पाता हूँ. Because if I take a lot of time in reading, so उसमें time काफी waste होता है. Rather, many a times you might find it funny, but many a times my score is inversely proportional to the time used in VARC. जब मैंने टाइम उसमें कम लगा के फटाफट आंसर किया, मेरा स्कोर ज्यादा आया है. जब मैंने बहुत मेहनत लगा के अच्छे से किया है, I've scored less in those cases. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. Now when I talk about logical reasoning and data interpretation, now this is one area we all know that here your scores are coming out of 60, right? And once again we have discussed it many a times. What is your strategy for doing that? It depends from person to person once again, but there is a very important point. Last year a 90 percentile was there at 5 questions, which means one set. And last to last year, an 80 percentile was there at 14 to 15 questions, which means was set. Whereas CAT 2021 में you had two sets of 4 each and two sets of 6 each. So ultimately तो यहां भी अगर आप एक सेट 6 वाला कर डालते तो you would have reached somewhere around 90 percentile. और 2020 में भी मैं देख रहा हूं 22 में भी one set would have taken you at 90 percentile. इसका मतलब तो आप मेरे ख्याल से समझ ही रहे होंगे, right? In the last 3 years it has happened. There are great chances that in LRDA, just by doing one set, you clear all the sectional cutoffs. Because I've told you before as well, there is no IIM, no other college which has a sectional cutoff of more than 85 percentile. One single set can clear it for all of you. कोशिश कीजिए वो एक वन सिंगल सेट जो है ना उसको किसी तरीके से पकड़ने की. सो योर स्ट्रेटेजी फॉर DILR, इट इज फॉर एवरीवन. द टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी फॉर DILR सेक्शन आई वुड से यही होनी चाहिए हर आदमी के लिए. माय फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड आउट द इजीएस्ट सेट फ्रॉम द गिवन सेट्स एंड डू दैट. टू फाइंडिंग दैट आउट, whatever time you take, it might be 12 minutes, 15 minutes, 16 minutes, हो सकता है आपके शुरू के 20 मिनट्स में आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए हो बिकॉज यू आर जस्ट ट्राइंग आउट ईच एंड एवरी सेट एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट विच इज द इजियर वन. कोई बात नहीं, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग. वंस यू फाइंड द इजियर वन यू वुड बी एबल टू डू इट वेरी फास्ट. उसके बाद कुछ भी करोगे. और अगर आपने दो सेट भी कर डाले, जरा सोच के देखिए, लास्ट ईयर 2 सेट्स मींस 10 क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस का मतलब 30 marks. You would have been above 99 percentile. It's a dream percentile for many of us. Two sets are taking you above 99 percentile and somehow we are stuck into all four. हमें ये लगता रहता है चारों करने हैं, चारों करने हैं, कुछ छोड़ दिया तो कुछ गलत कर दिया. प्लीज कम आउट ऑफ दैट मेंटेलिटी. आउट ऑफ 4 सेट्स 2 आर डेफिनेटली टू बी लेफ्ट. दो तो छोड़ने ही छोड़ने हैं. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट and I mean put it into your head. It has to be completely imbibed in your thought process that when I'm doing the sets, my job is not to do every set that come across, right? My job is to find out the easiest one and do it. I'm at 90 percentile, and then I'm even if I do 2 or 3 questions more, that's it. My job is done. Hi, sir. In recent All India BYJU'S mock, I scored 55 marks. So, sir, how can I improve? प्रखर, analysis is the key for that. 55 marks हालांकि बहुत बुरे नहीं है प्रखर, but I would suggest देखिए एक बार चेक कीजिए उसमें कहां पे आप कितना स्कोर इंप्रूव कर सकते थे. You will definitely find areas where you could have done the questions, but somehow you missed them. Sir, I'm an SC candidate with hotel management background, profile 779. Sir, my question is, what should be my target percentile for Blackie call? Souvik, let me answer this question for once and for all of you, right? Do not please think of it. What is your target percentile? Please, please, please do not do that.
How does that help you? I don't understand that, right? If I tell you your target percentile is 98, how would you get that? I mean, if you are currently at 60, 70, if your target percentile is 80 and you are currently getting 70, would you stop at 80? Please understand this. Higher is the percentile, better are the chances of conversion. Just getting a call from a college is not important. You might get a call from IIM Ahmedabad at an 82 percentile because of certain profile that you are having. What about the second stage? If you're not prepared for interview, if you have a lesser score in your CAT, you might not be able to clear it then what? So ultimately try to get the maximum possible percentile. I get this question from so many students. सर मेरा ये प्रोफाइल है तो मुझे किस परसेंटाइल को उसके बारे में टारगेट करना? अरे you have to target the maximum. Why do you target a certain percentile? Why do you target a 90 percentile, 92 percentile? Just with every mock keep on improving. That's what you have to do. It's as simple as this. Most important topics for 2023. Kiran Sai, in my opinion, I would say one is reasoning based DI, one is Venn diagrams, then metrics and grid based questions, and games and tournaments. Looking at the last 5-6 years, these four, in my opinion, are the most important areas for LR. So my friend just give me a suggestion to attempt all questions from each section. She told me that if you attempt 20 questions, by luck 10 something will be right. Is that a good idea? Sri Lakshmi, she is not your friend, I suppose. Sometimes if directly attempt questions in RCs without reading the passage, I mark them correct. But in contrary, when I read the whole passage, I end up marking wrong. Virendra, that means you have done the analysis. You know that. So अगर आपको पता है तो उस पर काम करना शुरू कीजिए. Now you already know this, that what are you doing? कब आप सही होते हैं, कब आप गलत होते हैं. But the point is, अगर आप ये कह रहे हैं without reading mark कर रहे हैं correct हो जा रहा है, यार ये guess work है. You also know this, as you yourself are telling me कि ये तुक्का लग रहा है. तुक्का एक बार ठीक लगेगा, दूसरी बार नहीं लगेगा. This keeps on happening. So of course we should always read it and then try to do it. You can choose one set and crack that. Why to do all? Absolutely, Pragat. That's what I am saying. 90 percentile तो यार उसी पे आ जाता है ना, उतना sufficient है. It's 3 months sufficient for 90 percentile in CAT white ball. I think it is sufficient if you are currently at above 60 percentile. It is sufficient to get 90 plus. Sir, when it's very hard to do all four sets within 40 minutes, why they give so lengthy sets? Virendra Singh, they want you to find out the sets and do them. अगर वो दो ही आसान सेट सबको दे देंगे तो सभी कर डालेंगे. How would they check people with respect to others? क्या तरीका होगा फिर चेक करने का? Of course they will give some some kind of test to you. तो चार सेट देंगे और उनका काम है कि भैया आसान वाला ढूंढो और करो. We are not saying that do all four, but we are saying find out the easier ones and do them. Now suppose there are two easy sets, even I have done them, both of them, you have done both of them. How would they find out that which one among the two is better? So they would give a paper that hardly people would be able to do all four, so that they can find all kind of people कि कितने लोग हैं इस रेंज के अंदर. कुछ 18 कर पाए, कुछ 17 कर पाए, कुछ 16 कर पाए. हर रेंज आ जाएगी ना. अगर 10 ही क्वेश्चन देंगे और उसमें से 20,000 people have done all 10 questions, how do they know that who is better, who is not? Of course that is the main criteria of that. Compulsory registration non-IIM institutions of CAT 2023 being an MBA and B school like FMS and IITs. नवीन यादव मैं अभी भी नहीं समझ पाया, एक बार फिर बताइएगा मुझे. How to do mock analysis, C will be taking a session on that. We have taken sessions on that. You can find that them out on our again app, sorry, this channel only. आप ढूंढेंगे तो आपको उस पे sessions मिल जाएंगे how to analyze a paper. Similarly, when I talk about a quantitative ability, you all know that last year there was 66 marks, last to last year 66, उससे पिछले साल it was 78. And once again I see, if you are not good at quant, at least try to get this 80 percentile. ये bare minimum है. 90 percentile is something at which you are clear, your all sectional cutoffs are clear, which was at 6 questions last year, 6 questions last year, and 8 questions a year before that. Okay, out of 22, and out of 26. A 95 percentile was there at just 7.5 questions, just 8 questions. A 99 percentile was there at 11 questions, and here at approximately 12 questions. So therefore, I mean, make your targets accordingly. Now, when I talk about a quant section, the strategy for quant probably would be different from strategy for VARC or LRDI, because you have singlets all across, right? You don't have RCs, you don't have caselets. यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको एक ही आंसर देगा. अब इसमें देखिए बहुत बड़ा फर्क मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा. हाउ डज दैट मेक ए डिफरेंस इन केस ऑफ LRDI, राइट? ध्यान से सुनिएगा. In case of LRDI, you have done a set, you have checked the others, you found the second easiest set is this set.
but 30 minutes are gone, you are left with 10 minutes, right? There is a possibility you won't be able to do that set in the complete 10 minutes. So you have to make a strategy according to that in there. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा इस बात को. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? Even if you are left with 10 minutes at the end of LRDI section, still you might end up doing nothing in those 10 minutes. This cannot happen in quant because single questions हैं. 10 मिनट बचे, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन नहीं होगा, दूसरा ट्राई कर लूंगा, वो हो जाएगा, तीसरा ट्राई कर लूंगा, वो हो जाएगा. That's what I am saying here. I hope you are getting my point. This happened to me last year when I was doing LRDI. मुझे दिख गया था ये सेट सबसे आसान है, ये किया, फिर सेकंड आसान था, ये करा, फिर थर्ड था, ये किया. I did it in 30 minutes. 10 minutes बचे हुए फोर्थ सेट के लिए. All 10 minutes went in vain क्योंकि मैं करते 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 आफ्टर 7-8 minutes I saw कि कोई एक स्टेटमेंट गलत पढ़ ली, सारा डेटा गलत हो गया, वापस बनाने का टाइम ही नहीं बचा. So though there were 3 minutes left, but I was sitting idle. I could not do anything. लेकिन हाँ, मैं ये कभी नहीं करता कि ये पूरा छोड़ दूं. देयर वर सम 2-3 टीटा क्वेश्चंस, सो आई मार्क समथिंग इन देयर. कुछ तो लिखना है वहां पे. टीटा अगर है तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं. अनफॉर्चुनेटली आई गॉट वन करेक्ट आल्सो आउट ऑफ देम. सो टीटा क्वेश्चन तो सबको करना ही चाहिए. वी हैव टोल्ड दिस अबाउट दिस बिफोर एज वेल. हाँ जी सर, फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स इज इट इजी टू गेट इनटू बी स्कूल्स? ऑफ कोर्स हिमांशु सैनी, दे हैव आई मीन लोअर कट ऑफ्स फॉर कैटेगरी पीपल. How to go about quants? That's the weakest section for me. What topics to for and what to avoid? सिद्धार्थ शंकर, सिंपल पॉइंट है. अगर आपका वीकेस्ट सेक्शन क्वांट है तो 90 परसेंटाइल लाने की कोशिश कीजिए, which comes at 6 questions. Just by doing arithmetic and algebra you can get it. Only arithmetic and algebra is sufficient to get it. I think उतना किया जा सकता है. हाँ, अगर आपको algebra tough लग रहा है, you can do arithmetic plus geometry plus number system. Even that can take you there. सर आपको क्या लगता है अब की बार पेपर पास्ट ईयर टाइप ही रहेगा या चेंजेस होंगे? मोटिवेशनल वर्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मेरी गट फील है वो ये कहती है इस बार पेपर थोड़ा सा लास्ट ईयर के मुकाबले इट वुड बी इजी. लास्ट ईयर वाज द मोस्ट डिफिकल्ट इन द लास्ट 3-4 इयर्स, तो सडनली शायद थोड़ा सा इजी पेपर आएगा. हाँ, एलआरडीआई हमेशा डिफिकल्ट रहता आया है, इस साल भी हो सकता है डिफिकल्ट रहे, बट यस ओवरऑल पेपर आई थिंक वुड बी स्लाइटली ऑन द इजियर साइड. What about registration of non-IM Institute for CAT 2023? Naveen Yadav, you don't have to do anything as I answered before. आपको सिर्फ CAT का फॉर्म भरना है and whichever non-IM you want to apply to, just fill up their form separately और कुछ नहीं करना. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. नाउ द फर्स्ट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मी, क्या करना चाहिए? दो तरह की स्ट्रेटेजी जनरली लोग अडॉप्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, scoring 30 to 33 in each section. 30-33 in each section can take you to 95-96, and last year 95-96 I think would have taken you to 99 percentile, rather 99.5, and last to last year it would have taken you to 98 percentile. ठीक है, लास्ट ईयर 99.5 ले जाता और लास्ट टू लास्ट ईयर 99 पे ले जाता. So this is one strategy. Now of course you would know whether I am good at all three, or I am very good at two and I am not that good at third, or I am average at two and not good at third. Because of that you would be, I mean, having a certain kind of target for you. I think if you have the balanced score in all three, this is the best. ये तो सबसे बढ़िया चीज है. ठीक है, this is the best. 30-33 अगर आप हर एक में ले आते हैं, that means 10 to 11 questions correct in all three of them, that can safely take you above 99 percentile overall. Of course, please take these statements with a pinch of salt. There is a possibility paper might be extremely easy today. ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाए, तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली वो किस तरह जाएगा, लेकिन देयर आर गुड चांसेस बाय स्कोरिंग 30-33 इन ऑल थ्री सेक्शंस यू कैन टेक अबव 99 परसेंटाइल. ये मतलब काफी हद तक इसके बढ़िया चांसेस हैं. ठीक है, एक और तरीका है टू गेट अ गुड परसेंटाइल. आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस अबाउट मेनी टाइम्स बिफोर एज वेल. समहाउ यू गाइस डू नॉट एग्री विद मी ऑन दैट. You have to promise me today कि आज आप एग्री करेंगे उस फॉर्मूले से. I'm simply giving you one formula by which you can easily get 99 percentile overall, all of you. ठीक है, within 5 seconds. और वो सिंपल सा फॉर्मूला ये है, just press the like button. Please do that. So you guys are somehow have been miser about it. I mean, this is the only fee that you pay for these sessions. So please do press the like button as well. Sir, in 40 minutes, is there any scope to recheck answers in exam? वीरेंद्र, generally it is not there. लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, मैं आप सभी लोगों से अर्ज जरूर करूंगा that please watch yourself in the mocks. If you are making too many mistakes and most of those mistakes are silly mistakes, I would suggest
Just recheck all your questions. Rather than doing two extra questions in the last 4 or 5 minutes, please recheck your questions. It would be better, in my opinion. अगर आपकी accuracy ज्यादा खराब रहती है. But through the mocks you have seen कि नहीं, you have been good enough. आप generally सही करते आए हैं और आप generally mistakes नहीं करते, silly mistakes. There is no need to recheck them. वो जरूरत करने की जरूरत ही नहीं है. Okay, so sir, I've heard attempting single set from LRDI gets you 90 percentile. Is it true, Siddharth? Yes, last 2 years it did. So there are good chances that this year also this might happen. Sir, for past 2 days I'm doing only games and tournaments, but I'm getting two correct answers. What to do? Sandeep, keep doing that. I mean, try to understand where are you going wrong. कहाँ गलती कर रहे हैं आप, सेट को नहीं समझ पा रहे हैं, और यू आर मेकिंग एनी सिली मिस्टेक, और यू आर मेकिंग एनी conceptual mistake. Figure that out, because there is no theory of these things, right? If you are able to understand, still not able to get the other questions, look at the solutions. Solution जहां से start कर रहा है, why did you not reach there? Why did you not think about it? So keep practicing that way. You can improve only by that. Okay? Sir, about mocks, almost 90 days to get. How many mocks generally one should give? Siddharth, I'll talk about it as well at the end of the session. I have kept it. Second strategy. Second strategy might be for a person who is not very good at one of these sections, but pretty good at the others too. ठीक है, ये किया जा सकता है उस आदमी के. क्यूए में बहुत अच्छा हूं मैं. फॉर ए पर्सन लाइक मी, क्यूए में आई एम गेटिंग 40. डीएलआर में अच्छा हूं मैं, आई एम गेटिंग स्कोर ऑफ 35. 75 का स्कोर मेरा यही आ रहा है. इफ आई एम गेटिंग 75 here just by getting 20-25, there are two benefits. First, it will take me to 99 plus percentile. Second, it will clear all my sectional cutoffs. ठीक है, देखिए ये तो आप नहीं कर सकते. However bad you are at section, you must target 80 plus percentile. You must target 80 plus percentile in all the three sections. But yes, I'm saying जरूरी नहीं है कि तीनों में ही 96 97 लेके आना है. You can get 99 plus in two of the sections, और किसी एक सेक्शन में you get 85 88. Even that is good enough to get a call from IIMs, right? The Blackie as well, उनसे भी कॉल्स आ सकती हैं, बिकॉज ब्लैकी के लिए भी जैसे हम पहले भी बताया 85 मिनिमम है. अगर 85 क्लियर कर दे रहे हो, इसका मतलब है कि बात बन जाएगी आपकी. सर, पैरा जंबल के लिए प्लीज कुछ बता दो. मैं जीरो हूं इस टॉपिक में. मोटिवेशनल वर्ल्ड, जितने जीरो तुम हो, मैं भी उतना ही जीरो हूं उसमें. आई थिंक विक्रांत सर वुड बी बेटर टू आंसर दैट. नेक्स्ट टाइम व्हेन विक्रांत सर इज टेकिंग दिस सेशन, पूछेगा उससे, फिर मुझे बताइएगा जब मेरा सेशन होगा. आई थिंक आई कैन गेट बेटर एट इट. डीएलआर में लॉजिक नहीं लगता सर, व्हाट शुड आई डू? व्हाइट बॉल, आई मीन डीएलआर इज ऑल अबाउट लॉजिक. इसके तो नाम में ही लॉजिक आता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट? सो लॉजिक नहीं लगता है तो पहली चीज तो ये वर्क अपॉन डीआई. एटलीस्ट वन डीआई सेट इज एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट इन ऑल द स्लॉट. सो वो एक सेट आपको कम से कम 90 परसेंटाइल पे तो ले जा ही सकता है. सेकंड थिंग, लॉजिक इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. मोर यू डू बेटर यू वुड बी एट इट. देयर इज नो थ्योरी ऑफ दिस. डीएलआर में सब लोगों को मैं एक ही बात बोलूंगा, कोई थ्योरी नहीं होती है. प्रैक्टिस कीजिए, यू विल कीप ऑन गेटिंग बेटर एट इट. सो नंदनी, आई थिंक द सेम आंसर फॉर यू एज वेल. कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए. शुरू में हो सकता है यू माइट नॉट बी एबल टू डू इट. यू हैव टू सी लॉट मेनी these as well. I mean, क्या बोलते हैं उसको, solutions as well. But ultimately you'd reach there. Sir, I'm scoring negative in DLR and very less in quants. The VRC is getting less for this. Anisha, please analyze your paper. Check where are you going wrong. Work on that. There is no other way out. हाँ, क्वेश्चन वाइज स्ट्रेटेजी. तो जैसे मैं पहले भी आपको बताया, इफ यू लुक एट द 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 95 percentile of CAT 22, right? A person is currently at 80 percentile or even below this. I think your first goal should be to reach there. 36 marks, that means 12 questions. Even if you are at zero today, just 12 questions in complete paper will get you an 80 percentile. Is it that difficult? Yeah, you can probably get 12 में से 6 questions in DALR, 6 questions in QA. Your job is done. When you are having a percentile like 80 85, do not think about clearing the sectional cutoff. फायदा ही नहीं है वो. जहां जो the college that you are taking at 80 85 percentile, they would not be looking at a sectional percentile. So I'm saying वहां sectional के बारे में मत सोचो. sectional नीचे भी रह जाता है, that's not a problem. Then think of moving from 36 to 49. 36 to 49 is how much? It is 13 marks more, which means approximately 4 to 5 questions extra. So if you have reached 80 percentile, your next target should be just one question extra in each section, and in one of the sections, 2 questions extra. That will take you to 90 percentile straight away.
And the day you reach there, your third goal should be 95 percentile, which is 11 questions more, which means another 4 questions, they will take you to 95 percentile. Slowly move there. ठीक है, आई रिपीट, जैसे मैंने पहले भी कहा, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ पाओगे. अगर हमेशा ही सोचोगे आई स्ट्रेट अवे रीच 99 परसेंटाइल, दैट वुड ऑलवेज लुक नॉट रीचेबल. पहुंचने का तरीका ये है कि सिंपली देखिए, अच्छा इसके बाद अगला मेरा टारगेट ये है, दिस इज माई नेक्स्ट टारगेट, सो नाउ आई रीच आई हैव रीच्ड 80 परसेंटाइल, तो अब मुझे ये करना है. टेस्ट की स्ट्रेटेजी यू विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, राइट. अच्छा, टेस्ट ये कह रहा है तो इसमें अब की बार ये स्ट्रेटेजी यूज करके देखता हूं. दिस टाइम आई विल डू अर्थमेटिक फर्स्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्यूए की ही बात कर रहा हूं, क्यूए में क्या करोगे? ठीक है, इस बार मैं पहले क्या करता हूं, पहले आई विल डू कंप्लीट अर्थमेटिक. वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज, सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करे, और फिर उसके बाद मैंने अलजेब्रा के जो मेरा सेकंड बेस्ट एरिया उसके करे, फिर थर्ड बेस्ट एरिया के. सेकंड स्ट्रेटेजी कैन बी, नो, फर्स्ट आई विल बी डूइंग द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. इजी क्वेश्चंस वो वाले बेसिकली जो मुझे आसान लग रहे हैं, whichever topic they are from. Third strategy might be that I'll just, I mean, cancel out all those questions which are not from my area. Algebra के मैंने काट दिए, मेरे को अच्छा नहीं लगता. ज्योमेट्री अच्छा नहीं लगता, काट दिया. जो बचे, अब इसमें से मेरा टारगेट है मुझे इतने क्वेश्चंस करने. आई मीन, just keep on changing strategies. You never know, I mean, what strategy is going to suit you. But do not go into the rumors. बहुत सारे बच्चे कई बार ये कहते हैं, नहीं नहीं, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमेशा एंड में होते हैं. कोई कहेगा नहीं नहीं, इजी क्वेश्चंस हमेशा बीच में होते हैं. Someone will tell you that in every 5 questions you have an easy question. Always find that out. I mean, do not go into all these kind of rumors. लोग कुछ भी बनाते रहते हैं बाहर. Please do not go into that. Do not fall for it. सर, डीएलआर सेट्स में टाइम बहुत लग रहा है, हो रहा है, पर एक सेट ही खुद से समझने और करने में 25-30 मिनट तक लग जा रहे हैं. वीरेंद्र सिंह, प्रोबेबली दैट मींस यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग सेट्स. That means you are talking about sets which are not to be done during the exam time. Just go through the previous year papers of CAT, वीरेंद्र. ये प्लीज आप सब लोग कीजिएगा to get that confidence. CAT 2022 के तीनों स्लॉट्स के पेपर उठा लो. Find out the easiest one among them. Try that out. तब आपको लगेगा यार तो 10-12 मिनट्स में आराम से हो जा रहा था. This was such an easy set. And every year, that's the point, that's what I'm making. Please try to figure out the easiest set and do it. It's not an exam where you just have to do all the questions. Somehow घर पे भी हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं जो हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डिफिकल्ट है. आई मीन, पीपल हैव मेड इट लाइक दिस. इफ यू आर नॉट एबल टू डू ए सेट, दैट इज कॉल्ड ए गुड सेट. जो आराम से हो जा रही तो बेकार सेट था, ये तो आसान सा था. अरे आसान था तो यही तो कैट में आता है. दिस इज व्हाट आई हैव टू फिगर आउट. आई हैव टू फिगर आउट सच सेट्स एंड देन आई हैव टू डू देम. So my job is not to unnecessarily get into the difficult ones. तो वीरेंद्र जो कर रहे हो 25-30 मिनट जिस सेट में लग रहा है ना यार, वो सेट इसका मतलब एग्जाम में करने लायक है ही नहीं. डू नॉट वेस्ट योर टाइम देयर. बट यस, आई मीन, डू देम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग समथिंग. डू नॉट डू देम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव अच्छा ये सेट अगर आ गया 25-30 मिनट में लग रहे हैं तो मैं कैट में कैसे करूंगा. आई डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है, उसमें जो चीजें आ रही है वो समझिए. सर, लॉग के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं क्या? मोटिवेशनल वर्ड मुझे बहुत आसान लगते हैं. उसका सीधा सा रीजन ये है, there are 7-8 properties of logs, nothing more than that. No theory of it, no another formula for that. वो 7-8 properties पे based log का हर question होता है. Every question of logarithm is based upon those 7-8 properties. Just read those 8 properties. Logarithm can be improved by a person in a single day. Trust me on this. 8 properties हैं, वो पढ़ लीजिए और एक दिन बैठ के logarithm के 50 क्वेश्चन बना लीजिए. Your job is खत्म. In one single day your logarithm is complete. कभी करके देखिएगा, एक दिन लगा लीजिए कि ये दिन मेरा logarithm के लिए है. आई एम गोइंग टू डू 50 questions on it. 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जितने लग जाए. I'll do 50 questions in one single day and these are the properties. I'll just see that how these properties are used. Trust me on this, you would be good at logarithm. Problem is we don't want to do that. हमें लगता है कोई छोटी कोई pills दे दे ऐसी कि logarithm लिखा हुआ हो, खा ले और हो जाए. That does not happen. Please get in the reality. Okay, when to take cat mocks, as someone was asking, अब कितने mocks देने चाहिए? मेरे ख्याल से एग्जाम इज ऑन 26 नवंबर, राइट. ये मैंने 2022 का कैलेंडर लगा दिया गलती से, बट 26 नवंबर इज ऑन संडे दिस ईयर. सो इन माय ओपिनियन, इन सितंबर मंथ you should be writing at least 4 mocks, at least 4, right, with a gap of at least 5 days, with a gap of at least 5 days. जैसे एक मॉक आपने मंडे को लिखा है तो नेक्स्ट मॉक कोशिश कीजिए सैटरडे से पहले ना लिखें. एंड whenever you write a mock, please try to analyze the mock
in next 2 days. Please try to analyze the mock in the next 2 days, because at that time you would remember कि आपने करते वक्त क्या क्या मिस्टेक की थी, क्यों की थी, क्या आपके दिमाग में था. In October month, you must write at least 5 mocks. I would say rather 5 to 6 mocks should be written in October. And in November, you should again be writing at least 5 mocks. राइट, रादर 4 to 5, क्योंकि लास्ट का वीक आपके लिए उसमें नहीं होगा अवेलेबल. सो 4 to 5 मॉक्स इन नवंबर, 5 to 6 मॉक्स इन अक्टूबर, एंड एटलीस्ट 4 मॉक्स इन सितंबर. दैट मींस इन द कमिंग डेज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू राइट 13 to 15 मॉक्स. ठीक है, 13 से 15 के करीब आपको मॉक्स जो है आने वाले दिनों में लिखने हैं. बट यस, यू कैन राइट लिटिल मोर देन दैट एज वेल. नुकसान तो नहीं करेगा कि इससे ज्यादा भी लिख लोगे तो, बट ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि 5 दिन का गैप 2 मॉक्स के बीच में जरूर रखिए. इट विल हेल्प यू. ठीक है, 5 डेज का गैप. और ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज विद इन 2 days. एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये मैंने आपको पहले भी काफी बार कहा है. मुझे हमेशा देखने में लॉग के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं. ट्राई करो यार, नहीं लगेंगे, एक दिन करके देखो. सर सेम मॉक्स के रीअटेम्प्ट भी होता है. इट इज ओके टू डू रीअटेम्प्ट. रीअटेम्प्ट इज लाइक एनालिसिस. एनालाइज करो ना, रीअटेम्प्ट क्यों दे रहे हो? राइट, जस्ट एनालाइज द पेपर, नथिंग एल्स इज टू बी डन. खराब एलआरडीआई सेक्शन के प्रेशर में क्यूए भी खराब हो जाता है कभी कभी. अंकित झा, कभी कभी नहीं, बहुत बार. एंड दिस हैपेंस विद एवरीवन. इट्स नॉट हैपनिंग विद अस ओनली. Probably therefore only CAT authorities have put LRDI exactly in the middle of the two sections. They are saying कि how many people are there who can get over that feeling of LRDI कि मेरा LRDI खराब हुआ, still I can do better in quant. Can you do that? This is a part of their test. They're checking the skill in you, right? How much pressure do you take about things? आप कितना कैसा फील करते हैं किसी सिचुएशन में? That's exactly they want to check. Till how many mocks we have to write before 26th of November? Priyachi, as I just answered, try to write at least 13-15 mocks. Okay. Till I think probably you are saying कि किस date तक. So do not write any mock after 21st or 22nd. Right. Last mock should be written by maximum 22nd, not after that. कम से कम there would be 3 days before your CAT exam when you are completely free. You are just revising some of the concepts. You are watching some movies and TV series and all. That's how you have to do it. Is it okay give mock if your concepts are not clear? Do after full study? Nahi, white ball. Even if you have not completely done all the concepts in your classes, still you should write the mocks. देखिए कॉन्सेप्ट हम सब लोगों ने पढ़े हुए हैं. कॉन्सेप्ट तो वही है 10th तक वाले, राइट. मोर क्लैरिटी वुड कम विद टाइम, लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट तो आपके सबके पढ़े हुए हैं. सो प्लीज कीप राइटिंग मॉक्स एज एंड व्हेन दे अपीयर. वो आपको करना ही करना. ओके. So that is all from my side, guys. That's all about today. I'm sure that this session was helpful for you. Must have understood, right, whatever I tried to say. And Ace Cat with BYJU'S exam prep. So there we are having a 3-day free trial access for all of you. I don't know how many of you know about it, but I'm sure I've talked about this before as well. For all the people for whom this is their first this thing, okay, जो पहली बार शायद मुझसे मिल रहे होंगे, उन लोगों को बता रहा हूं कि if you want to have a trial access of a BYJU'S exam prep app, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं. Just go to the app, write your mobile number, start the free trial. For 3 days you can actually check what exactly do we provide in our courses. All the videos, all the material whichever is there, वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा. Also, we have started our test series in which we provide you 80 plus mock tests, 10,000 plus practice questions, topic test, video solution for every set, a detailed mock analysis. So there are a lot many things that you can find it. And of course, you are going to get the non-CAT mocks as well. These are a brilliant results on the last year classroom program. As you can see, these are just the top 5 people. There are many more, and you can also be a part of it if you join in our comprehensive program, which has 300 plus engaging videos, 135 plus live sessions, a lot many things like 75 plus mock tests, practice questions, and GDPI WAD preparation as well. So there is a lot which is included in this, right? And I'm sure that you already attended this session that we had yesterday at 11 a.m. We are having now the next All India Open mock from 8th September to 17th of September. We had the first one a few days back from 11th of August to 20th of August. And these All India Open mocks are extremely important. The reason is they are written by so many people. We keep them free for everyone. So throughout the nation, people write it. So you actually get to know about your performance among thousands of people. So I would always suggest all of you to please write these mocks.
Your syllabus has not been completed, still like it. And we also do a proper analysis of this. We do a live attempt of this. We give you video solutions of that. So there are lot many things. If you are actually preparing for CAT and you are not writing this, that means you are not preparing probably. Okay. You can also appear for our scholarship test on 27th of August, and I think the next date you will find out on the app itself. अगर आप ऐप पे जाएंगे तो वहां आपको next मिल जाएगा. Next, when do we have the scholarship program? Okay. So we are also available on all of these media handles, guys. That is all from my side. I'm sure you have understood all that I have talked about. I'm sure you like the session. Please do press the like button as well. And if you have any more questions, please put them in the comment section. I'll be happy to answer it there. QA soothing section as compared to LRDI VRC. Person specific. For me, it is. For someone else, it might not be. जिन मॉक्स मेरा QA 30 में आता है, पर मॉक पोस्ट मॉक एनालिसिस में टाइमर लगा के इजिली 45 प्लस आ जाता है. अंकित, ये सबके साथ होता है. मॉक के टाइम पे एक अलग प्रेशर होता है. यू हैव अ टाइम लिमिट एज वेल एंड यू हैव अ प्रेशर, राइट? बिकॉज ऑफ विच यू ऑलवेज फील कि नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से. अब बाहर जाके आप बैठे तो आपको पहले से एक तो सारे क्वेश्चन आप देख चुके हैं. यू हैव एन आइडिया दिस क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, तो वहां तो स्कोर ज्यादा आ ही जाता है. सबके साथ होता है. बट just keep working on it. Analyzing your paper is most important. Please work on that. That's the key of success here. Okay. So that's all from my side, guys. Good day to all of you. We'll meet again in the next session. Till then, please take care of yourself. Have a good day. Bye bye.